Namaskar, hello and welcome to Sansad TV. I'm Tina Jha. You're watching House Highlights, where we'll take you through the day's proceedings in both houses of Parliament. First, the headlines. Parliament takes up discussion on the motion of thanks on the President's address. BJP leaders Geeta Shakya moves motion in the Rajya Sabha, Harish Dwivedi in Lok Sabha. Discussion on motion of thanks opens in both houses, with BJP leaders welcoming government policies, paving way for an inclusive and progressive new India. Opposition parties raise farmers' issues, question government on inflation and job creation. During question hour in Lok Sabha, Commerce and Industries Minister Piyush Goyal tells House that PLI scheme aimed at creating global champions and creating FDAs with more countries. And during zero hour in Rajya Sabha, members asked government to examine allegations of irregularities in the railways, non-technical popular categories and level 1 exams. Two days after President Ramnath Kovind spelled out the roadmap of the Narendra Modi government, the upper house took up the discussion on the motion of thanks on the President's address. BJP member Geeta Shakya moved the motion. Member Shwet Malik seconded it. Welcoming the policies of the government, they said it had paved way for inclusive and progressive new India. Floor leaders of the Trinamool Congress, the Samajwadi Party and the DMK also took part in the motion of thanks discussion in the upper house. Listen in. प्रधानमंत्री जी ने देश के पिछड़े समाज के हितों को देखते हुए संवैधानिक संशोधन कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक शक्तियां प्रदान की। इसके लिए उनका हृदय से मैं धन्यवाद देती हूं। अनुच्छेद 342A के जरिए अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूचियों में व्यवस्था की गई है। आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए अनुच्छेद 366(26)C के जरिए राष्ट्रीय आर्थिक व शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इसके लिए इन व्यवस्थाओं के कारण देश केंद्र के साथ साथ अब राज्यों में भी ओबीसी वर्ग को उनके अधिकारों को प्राप्त हो रहे हैं। चेयरमैन सर, जो एम्स है, आईआईटी है, आईएम है, ये हमारे उच्च शिक्षा संस्थान है जहां से देश का विकास हो रहा है, जहां से देश विकसित हो रहा है। आज पंजाब को 70 वर्ष के बाद पहली बार अमृतसर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मोदी जी ने दिया। आज बठिंडा में पहली बार 70 वर्ष के इनके कुशासन के बाद एम्स जो है वो बठिंडा को मोदी जी ने दिया है। आज आईआईटी पंजाब को पहली बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पंजाब को मोदी जी ने दी है। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहली बार पंजाब को मोदी जी ने दी है। एक्सप्रेस हाईवे अमृतसर दिल्ली और कटरा एक्सप्रेस हाईवे, ये कैसे तीर्थस्थल गुरु नगरी और वैष्णो माँ का जो द्वारा है उसको एक्सप्रेस हाईवे को मंजूरी दी है, जिससे अमृतसर से दिल्ली की दूरी केवल 4 घंटे रह जाएगी। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए मिलने वाला, लेकिन कुछ नहीं मिला। वो तो छोड़िए, अरे आपकी बारी आएंगे तो बोलो, बार बार मत मुझे छेड़ो, मैं भी उतना ही गंभीर लेता हूं। सर, महंगाई, उसमें महंगाई का कोई जिक्र नहीं है, इसको कैसा कंट्रोल करने वाले। बेरोजगारी का नहीं है, किसान और मजदूर की बुरी जो हालत है और SC/ST पर जो ज्यादती हो रही है और गंभीर आर्थिक चुनौतियां जो है, ये भी उसको टैकल करने के लिए उसमें कुछ नहीं कहा गया। और आज मैं ये कहूँगा कि जो मेरे पास हिसाब है उसके अनुसार भारत सरकार में करीब 9 लाख
नौकरियां यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी इलाके मिलके पद खाली है. Has not addressed this growing problem of attack on time-tested institutions and authorities. Sir, in the name of economic reforms, the government has emerged as a Vikreta Sarkar, a seller's government, in as much as it has decided to sell out almost all public properties. These are PSU banks, insurance companies, and even profit-making public sector enterprises. Sir, PSU banks earned net profit of rupees 31,820 crores in 1 year, that is last fiscal 2020-2021, which is the highest in last 5 years. Sir, yet government wants to sell PSU banks to private sector, for which Banking Nationalization Amendment Act is reportedly in the offing. अगर 100 वोट होंगे तो 1000 वोट डालेंगे वो दूसरों के, और उससे सीखना ही नहीं चाहते कुछ भी. यानी पूरे देश में अब कोई अपनी नीतियों के लिए बात नहीं हो रही है. गालियां दी जा रही है, गुंडों की बात ही है. एक उप मुख्यमंत्री, एक मंत्री, और किस सीमा तक कैसे बात करते हैं. चित्रकूट में गृह मंत्री जी ने कहा अखिलेश कितना ही जोर लगा लें, मंदिर को नहीं रोक सकते. कौन मंदिर को रोक रहा है? कौन मंदिर को रोक रहा है? ये तो मंदिर के रुपए में चोरी कर रहे, चंदे में. अखिलेश की सरकार आएगी तो मंदिर बेहतर बन जाएगा और जल्दी बन जाएगा, कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी. मैं सदन के माध्यम से कहता हूं. The producer, see, basically 80% of the country are basically agriculturists. During the economic recession, India survived only because of two things. One is public sector and the other is agriculture sector. Even during the COVID pandemic, India had food sufficiency because of our agriculture, but you are killing it. So also the public sector. See, you are giving 5G to the private sectors, but not 4G, even 4G to BSNL and MTNL. It is a silent way of killing the public sector, BSNL and MTNL. So everyone would migrate from BSNL to the private sector when they are, of course, when everyone is living in a digital world, we are for 5G, whereas they are not even able to provide 4G. They have enough infrastructure. The infrastructure of the BSNL is being utilized by other private networks. Now we have already seen there are international reports which does not get any reflection in the president's deliberation. International report says that inequality in India has increased, widened up much during this period. More than 50% of the world's poor people belong to India. How do you address this? What is your scheme? How do you think that we can really recover these people and bring them above the poverty line? There are countries in the world who have been successful to bring all people above the poverty line, which you have no scheme to speak of. 80% of the Indian household has suffered income loss. Rajya Sabha Chairman M. Venkaiah Naidu has urged members of Parliament to ensure a productive budget session. Chairman Naidu highlighted the significance of the first Parliament session in a calendar year that marks the historic 75th year of India's independence, as well as 70 years of electoral journey of free India. The chairman urged all sections to ensure the best performance for the upper house. In fact, he also reminded members that the budget session had seen 93.5% productivity last year. The first in this historic year, this August House has lost 52.10% of the valuable sitting time due to disruptions and forced adjournments. During the preceding monsoon session last year, the loss of functional time of this House was as high as 70.40%. This trend of disruption is highly disturbing. I refer to the same with fervent hope that we all reflect on the same and conduct ourselves in a manner befitting the historic time that we are passing through. During the last 70 years of election, the voter turnout has increased from 45% in the elections to the first Lok Sabha to over the highest ever, over 67% in the 17th elections in 2019. This marks an increase of 50% in voters' participation.
The voter turn in polls to the state assemblies is even higher. This goes to prove that citizens of our country continue to impose their faith in democracy. In this historic year, the need of the hour is for the 5,000 MPs, MLAs and MLCs to resolve to return to the people the favor they have been relentlessly doing by nurturing our democracy. The only way of doing so is to conduct ourselves in a manner befitting the trust the citizens still have in our parliamentary democracy. Having said so, I would like to remind that this budget session last year, the House clocked a productivity of 93.50%. The spirit of occasion demands that this House turns out the best performance during the important budget session. Honorable members, this is the 6th session being held since the outbreak of COVID pandemic. Given the highly infectious nature of the variant of corona virus during the current third wave, both the houses are meeting in shifts, first adopted during the monsoon session of 2020. Members of the upper house joined the chairman in condoling the deaths and expressing sympathy for the victims of flood calamities in Malaysia and also the Kingdom of Tonga. Several parts of Malaysia, remember, were hit by a severe flood calamity last December, while the island Kingdom of Tonga had a massive underwater volcanic eruption last month. It triggered 1.2 to 1.5 meter high tsunami waves, flooding the Tongan capital. The upper house reiterated India's stand of solidarity with the victims of the tragedies. Malaysia was hit by severe torrential rains, causing severe flood calamity in several parts of the country. This was one of the most devastating floods in 100 years in Malaysia. Over 70,000 people were displaced from their homes and 50 people have reportedly lost their lives. The unprecedented floods wreaked extensive damage to the property and livelihood of the people. A massive underwater volcanic eruption near the Tongan capital of Nuku'alofa triggered 1.2 to 1.5 meters high tsunami waves, causing flooding in the island kingdom of Tonga. This House joins me in expressing our heartfelt condolences as well as deep sympathy and sorrow on the losses suffered by the people of Malaysia and the Kingdom of Tonga and reiterate India's stand of solidarity with them. I request the members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of those who lost their lives in these tragic incidents. And issues of public importance were raised in the Rajya Sabha during the zero hour. Rajya Sabha members asked the government to examine allegations of irregularities in the railways, non-technical popular categories and level 1 exams that led to violence in Bihar and parts of Uttar Pradesh last month. Issue of unemployment, particularly in Bihar, must be looked at, and the irregularities that are alleged by the students in this examination must be examined and corrected. NTPC जो 35,000 सीट्स हैं उसके 3.5 लाख रिजल्ट और अनाउंस किया जाना चाहिए. 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट, एक स्टूडेंट का 3 जगह नाम है, तो इसलिए जो 7 लाख रिजल्ट अनाउंस किया है, it is actually only 3,50,000. So I appeal the Railway Ministry to announce another 3,50,000 results of the students so they can appear in the exam. And time for a short break here. We'll be right back. Do stay with us. Welcome back. You're watching House Highlights. In the Lok Sabha, the motion of thanks on the President's address was moved by BJP MP Harish Dwivedi and seconded by member Kamlesh Paswan. Congress leader Rahul Gandhi initiated the discussion for the opposition. Listening. मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए काम किया, उनको अपमानित करने का काम समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है. माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो सेंट्रल हॉल में संयुक्त सदन में उन्होंने संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को कहा था कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को लेकर के चलेगी और उस पर काम करेगी. आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था
देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर को समर्पित हमारी सरकार होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था नौजवान, माताओं, बहनों को समर्पित हमारी सरकार होगी। लेकिन शायद उस समय हम लोगों के ध्यान में भी ये नहीं आया कि इसका मतलब क्या होता है। और उस समय सबका साथ सबका विकास का जब नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया तो तमाम विपक्ष के नेताओं ने हंसी करने का काम किया। लेकिन सबका साथ सबका विकास होता क्या है, गरीबों मजदूरों को समर्पित सरकार होती क्या है, इसका उदाहरण जब धीरे धीरे हमारी सरकार काम करना शुरू की तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा कि हिंदुस्तान में हर गरीब के घर तक हम बिजली की रोशनी पहुंचाएंगे। हमारी सरकार ने केवल कहा नहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना बना करके हर गांव तक खंबा, तार, ट्रांसफार्मर पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया, जो शायद 20, 25, 30 साल पहले मिल जाना चाहिए था। गरीबों का हक था। सरकारें गरीबों के लिए होती हैं, सरकारें अमीरों के लिए नहीं होती हैं। गरीबों को हर प्रकार का अधिकार मिल जाए, हर प्रकार की सुविधा मिल जाए, इसके लिए सरकारें होती हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर गांव तक खंबा, तार, ट्रांसफार्मर पहुंचाया। साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा खंबा, तार, ट्रांसफार्मर पहुंचाने से केवल गरीबों के घर में रोशनी नहीं पहुंचेगी, तो गरीबों के घर में सौभाग्य योजना बना करके करोड़ों गरीबों के घर में मुफ्त में बिजली का कनेक्शन और मीटर देने का काम मोदी सरकार ने किया। और इस नाते मैं ये कह सकता हूं कि मोदी सरकार ने हर गरीब की चिंता की। गरीब के घर में भी बिजली की रोशनी पहुंचनी चाहिए, गरीब के बच्चे को भी बिजली की रोशनी में पढ़ाई करने का अवसर मिलना चाहिए। महात्मा गांधी जी जब बनारस गए थे स्वच्छता की बात किए थे, और स्वच्छता की बात जब किए थे तो उन्हीं के कांग्रेस के साथी लोगों ने उनका उपवास उड़ाने का काम किया था। और उसके बाद किसी ने स्वच्छता की बात की तो हम लोग के देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने की, सभापति महोदय। और जब प्रधानमंत्री जी ने कहा तो उस समय भी हमारे साथी, संसद के साथी हों, चाहे क्षेत्र में जब हम लोग गए स्वच्छता अभियान को चालू करने के लिए, तो हमारे मित्र ही सांसद सेंट्रल हॉल में कहते थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी तुम लोगों को झाड़ू थमा दिए। हम लोगों का भी उपहास करने का प्रयास किया अध्यक्ष, सभापति महोदय। लेकिन जब हम लोग क्षेत्रों में गए, चाहे सांसद हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे स्वयं समूह हो, चाहे अन्य समूह लोगों ने मिलकर किसी ने तालाब की सफाई करने का प्रयास किया, किसी ने रोडों को सफाई करने का प्रयास किया, हॉस्पिटल की सफाई करने का प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ वहीं तक ये सीमित नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच थी स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाकर पूरे देश में जो क्रांति लानी है वो तभी संभव हो पाएगी जब इसको हम गांव तक इसको लेकर जाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इसको काफ़ी हद तक सफल भी पाया। और कौन लोग हैं ये? समाज के जो सबसे दलित, वंचित, पिछड़ित व्यक्ति है, उनको कैसे मदद किया जाए, ये अगर जो किसी से सीखना है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से सीख। असंगठित जो सेक्टर है उस पर आपने आक्रमण किया, कैसे किया? नोटबंदी, गलत जीएसटी और कोरोना के समय जो सपोर्ट उनको देना था आपने नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि आज 84% हिंदुस्तान के लोगों की आमदनी घटी है और वो तेजी से गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं। यूपीए की सरकार ने, आपने पूछा 60 साल की बात आपने कही, यूपीए की सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था 10 साल में। हमारा आंकड़ा नहीं है, हमारा आंकड़ा नहीं है, हमारा आंकड़ा नहीं है। आप हंसिए, हमारा आंकड़ा नहीं है, यह सच्चा आंकड़ा है। 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी में वापस डाल दिया। द कॉन्वर्सेशन बिटवीन आवर पीपल इज नॉट टेकिंग प्लेस। आवर इंस्टीट्यूशंस आर अंडर अटैक एंड वी आर कंप्लीटली सराउंडेड। The Chinese have a very clear vision
of what they want to do. They are very, very clear about what they want to do. And 1 second, please. The single biggest, you can ask anybody who understands, the single biggest strategic goal of India's foreign policy has been to keep Pakistan and China separate. This is fundamental for India. And what you have done is you have brought them together. This is the points pronounced by the President of India in the floor of Central Hall, sir. What has happened, sir? What has happened? This is not new to India. So even in IAS examination, even today, the people are writing in their own languages. But as if it is a new to the House or new to the parliamentarians, President has said, he is going to bring the languages in the competitive examinations. That is not proper. It has been in war for many years. So even in the railways and this postal examination, 2 to 3 years back, what has happened? It was denied. The same government which is now coming forward through the election, this president's speech, that they are going to bring the languages once again. They denied the opportunity of conducting examination in the local languages, in postal and as well as railway. But finally, only the administrative ministers interfered and they have done it. They brought back the languages once again, sir. But DMK, because of the DMK agitated in both the houses of the parliament, inside the parliament, outside the parliament, this has happened. They have given the opportunity right, the competitive examination in their languages, sir. Sir, I rise to speak on the motion of thanks on the President's address, and I oppose the motion of thanks and support all the amendments which I brought on this motion of thanks. Unfortunately, all the members of AITC, they are away in Calcutta, where our chairman's election today. Only our colleague Mahua Moitro will speak tomorrow, is here. But it doesn't matter. I speak with the courage of conviction. And what I want to say is that this government has given a series of what it has done. But it's the same thing. Ayushman Bharat, PM Garib Kalyan Anna Yojana, PM Awas Yojana, Jal Jeevan, PM Kisan Samman Nidhi, SHG, Ujjala, in which they gave 3 cylinders which have run out, GST, etc. Pradhan Mantri Gati Shakti Master Plan, ordnance factories, etc., etc. There is nothing new, unfortunately, in the President's speech. And earlier, as soon as the lower house assembled for the day, members from various parties, including the Congress, DMK, the BJP and the Shiv Sena, raised several issues of public importance during the question hour. Let's take a look. ये जो मेक इन इंडिया की बात होती है स्वदेशी की, विदेश से पैसा ले जाते हैं और स्वदेशी की बात किया जाते हैं. हमारी ब्रांड वैल्यू पता नहीं. विदेश से जब पैसा आएंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो हम बेचेंगे विदेशी मार्केट में. अभी ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म चल रहे हैं, सारे दुनिया में अनसर्टेनिटी चल रहे हैं. इस हालत में आप ये 25% जीडीपी पहुंचने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एनुअल कितना ग्रोथ होना चाहिए और ये ग्रोथ होने के लिए आपका रोड मैप क्या है? जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग की आपने विषय बताया, वास्तव में तो मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपको अंतर्ग्रह में देखना पड़ेगा कि आपने क्या किया जिसके कारण भारत में इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग का ये बुरी दुर्दशा हुई. हमारी तरफ से मेक इन इंडिया के तहत अलग अलग योजनाएं लाए. अभी पीएलआई की स्कीम के बारे में बड़े विस्तार से बजट में भी बताया गया. 14 सेक्टर्स में लगभग 2 लाख करोड़, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए 74,000 करोड़. इस प्रकार से हमारी कोशिश है कि भारत में ग्लोबल चैंपियंस बने,
माननीय वित्त मंत्री ने अभी अभी बताया कि किस प्रकार से पीएलआई स्कीम्स आने से लगभग 30 लाख करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की वृद्धि भारत में होने का अनुमान है। तो मैं समझता हूं कि ये सरकार प्रतिबद्ध है भारत की मैन्युफैक्चरिंग शेयर बढ़ाने के लिए। From the Honorable Minister that whether it is a fact that there are about 19 departmental post offices in West Bengal are not yet computerized and migrated to CBS. If so, the details thereof and the reasons therefore and the steps taken proposed to be taken in this regard. जैसे माननीय मंत्री जी ने पूछा है, माननीय सांसद जी ने रिमेनिंग 19 पोस्ट ऑफिस जो बाकी है वो हम फेज मैनर में कर रहे हैं। Okay, thank you. That's it from us in this bulletin. Thanks very much for your